Next topic is of evolution of life form. The first life, how they are formed, different theories created by the scientist of evolution of first life. Out of that, one is of spatial creation. Spatial creation theory having three meanings. According to that three meanings of first is of all living beings created as such जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो एज सच क्रिएट किए गए एक ही टाइम में. कोई ऐसा नहीं पहले कोई हुआ होगा बाद में कोई. ऑल लिविंग बीइंग क्रिएटेड एज सच. सेकंड meaning of this spatial creation theory was diversity was as such since creation. The diversity which is present today, which is also as such from the creating time. जब से ये क्रिएट हुए तब से लेकर के वैसी ही डाइवर्सिटी है एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर. आगे भी यही रहेगी. ऐसे ही सारे सच क्रिएट किए गए और फ्यूचर में भी ऐसे रहेंगे. एंड थर्ड मीनिंग ऑफ दिस क्रिएशन इज ऑफ द अर्थ इज ऑफ अप टू 4,000 year old. These three meaning found out by the scientist of the spatial creation. But the sea voyage of Charles Darwin by the HMS Beagle, he found many things. Charles Darwin ने अपनी जो सी वॉयज है उसके थ्रू उसने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था. एंड दैट ऑब्जर्वेशन शेयर विद द साइंटिस्ट. अकॉर्डिंग टू दिस हिज सी वॉयज, उनकी जो सी वॉयज थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, द ऑर्गेनिज्म शेयर their similarities to a varying degree, यानी ऑर्गेनिज्म जो अपनी जो सिमिलरिटीज होते हैं वो सभी एक साथ नहीं, वो डिफरेंट अलग अलग डिग्री पे ये शेयर करते हैं. उन्होंने ये भी कहा था सम ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट एक्सटिंक्ट. एंड द लाइफ इज इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर एंसेस्टर. लाइफ जो है वो अपने उनके एंसेस्टर से इवॉल्व हो रही है. और कोई भी पॉपुलेशन जो बिल्डअप होती है, दैट वेरिएशन विल बी देयर. ए पॉपुलेशन इज बिल्डअप इन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू विच वेरिएशन इज देयर, एंड दैट वेरिएशन enables to survive in the environment. When a population will be built up, or when the generation of particular organisms will be built up, that will be share or differences will be there in that organism, and that differences enables to cope up the environment and enables to survive in the new environment. यानी वेरिएशन जब आती है तो वो वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म को नए एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती है. ये चार्ल्स डार्विन ने फाइंड आउट किया था. प्लस उन्होंने बताया रिप्रोडक्टिव फिटनेस,
fitness means the organisms who are reproductively fit, meaning of that who produce more and more progeny. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, that progeny will be more survive. That is the reproductive fitness. According to Charles Darwin, the organisms which produce more and more offspring that survive more and more timing. जितनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग होगी वो उतनी ही प्रोजेनी ज्यादा सरवाइव करेगी. और इन्हीं की ऑब्जर्वेशन को चार्ल्स डार्विन की ऑब्जर्वेशन क्या थी? उनकी जो जल यात्रा थी, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म शेयर देयर सिमिलरिटीज ए वेरियस डिग्री. अलग अलग डिग्री पे होती है, अपनी जरूरी नहीं है सबको एक साथ सारी सिमिलरिटीज एक ही साथ शेयर कर दें. ऑर्गेनिज्म कुछ या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हो, और जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे नई लाइफ इवॉल्व हुई है, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको बाद में क्या कहा गया? नेचुरल सिलेक्शन. Natural selection. The organisms which produce more and more organisms that survive more and more, and which is favored by the nature, that is known as natural selection. And such observation also concluded by the another scientist, that is Alfred Wallace. अल्फ्रेड वालेस एक दूसरे साइंटिस्ट थे. उन्होंने भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की थी, और उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है या जितने भी जो ऑल एग्जिस्ट लाइफ है, दैट विल बी शेयर देयर सिमिलरिटीज एंड शो द कॉमन एंसेस्ट्री. जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सिमिलरिटीज को अगली जनरेशन में शेयर करते हैं, और वो सारे ऑर्गेनिज्म अपनी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, यानी वो सभी एक ही तरह के एंसेस्टर से डेवलप हुए होंगे. दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, विच वॉज फाउंड बाय चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज सी वॉयज. चार्ल्स डार्विन सेज द life is evolved from the previous ones. Means evolution of life is there. So how can we say evolution of life is there in the nature? Life जो है धीरे धीरे इवोल्व हुई है नेचर में, उसका कोई ऐसा एविडेंस है. सो मेनी एविडेंस इज देयर evolution of life. So first of we studies that paleontology evidence. Paleontology evidence. Paleontology. What is the paleontology? Paleontology, the study of fossils, is known as paleontology. The study of fossils is known as paleontology. What is the fossils? Fossils is of dead remains of an organism is known as fossils. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन्स है या डेड ऑर्गेनिज्म का जो रिमेनिंग पोर्शन विच वॉज फाउंड इन दैट अर्थ क्रस्ट, दैट इज नोन एज फॉसिल्स. तो वो बहुत सारे एविडेंस फॉसिल्स के ऐसे मिले हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में नहीं है, और सम ऑफ द फॉसिल्स ऑल्सो सिमिलर विद द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म. तो इस एविडेंस से पता चला कि दैट ऑर्गेनिज्म इज डेवलप फ्रॉम दैट previous ones one by one. For example, dinosaurs. Dinosaurs normally not found in the nature right now, but their fossils found in the earth crust, and especially that sedimentary rocks present in the earth crust, in which different types of fossils founded that show similar ancestry of the present organism, or sometime the organism which is not present now but their fossils is found in the sedimentary rock. That means that was present in past time. इसका मतलब क्या, वो
पहले कभी थे परंतु अब नहीं है, तो उनसे नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो चुका है। तो उसको कह सकते हैं अपन दैट पैलियोंटोलॉजिक और फॉसिल्स दैट शो द ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस वंस। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल एविडेंस अगर अपन बात करें दैट इज ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव anatomy and morphology. Anatomy, what is anatomy? That is internal study of an organism, that is known as anatomy. Morphology, that is external appearance of an organism, is known as morphology. Now first, if we study the different organs of organism, we find out their structure is similar but not function. Their function is similar but not structure. So first of all, if we see the forelimb of human, frog, tiger, cheetah, or any other mammals, or we can say birds also, that forelimbs have mainly different bones, that is humerus, radius, ulna, metacarpals, carpals, and phalangeals. These different types bones present in the forelimbs. If we see the internal structure of forelimbs, that is human, frog, tiger, or birds, their internal structure is same. But if we see their function, that is of different. Means that have common ancestry. Means their origin is similar, but not their function. And such type of evolution is known as divergent evolution. Divergent evolution means if their origin is similar but function is different. Origin similar, function different. Function different, that is the divergent evolution. And such type of organ is known as homologous organs. Homologous organs or divergent evolution that show common ancestry, but they perform the different function. If we see with respect to the plants, that is of plant, Bougainvillea, cucurbita, in spine in Bougainvillea or thorn, and tendrils in cucurbita. Tendrils in cucurbita, both having similar internal structure. इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक जैसा होता है, बट स्पाइन हेल्प इन द प्रोटेक्शन and tendrils help in the climbing, but their function is different. So it is also example of homologous organs or homology. Homology means their function is of different but similar in structure, or such type of evolution is known as divergent evolution. Similar example, that brain and heart of the vertebrates. Brain को देखें या heart को देखें, heart will be developed step by step. If we see the heart of the fishes, that is 2 chamber, heart of the amphibians, that is of 3 chamber, heart of the reptiles, that more evolved, and heart of the birds and human beings, that the highest evolved, in which double circulation is there. So 2 chamber, that is the 4 chamber, 2 chamber auricles and 2 chamber ventricles. So these are the example of divergent evolution. Again, some organs which perform
similar function but having different origin. Some organ similar function but different function. Different function, and such type of different function. For example, that wings of butterfly wings of birds, butterfly and birds, they are help in the flying of that organism, but their internal structure is of quietly different, and such type of evolution is known as convergent evolution. Means if you see the wings of butterfly and birds, their origin is of dissimilar, their internal structure is of different, but they perform the same function, both are help in flying. So such type which are comes from different direction toward the same point, अलग अलग तरफ से एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो वो convergent evolution कहलाएगा. इसी तरह से एग्जाम्पल with respect to plant, that is sweet potato and potato. It is of root and it is of stem. Both the perform same function, that is the storage of surplus food material. Plant, that is sweet potato and potato. The sweet potato is of modified root, potato is of modified stem. Both the portion of the plant help in the storage of surplus food material, means their structure is different. One is the root, one is the stem. Structure is different, both the perform same function, which is the convergent evolution, and such type of organs is known as analogous organs. Analogous organs. So here two types of organ is there, or two types of evolution is there. One is of convergent evolution, another one is of divergent evolution. Convergent evolution, in which analogy is there, means different origin is there but the similar function, and divergent origin, similar origin, different function. तो दोनों तरह की evolution है, that show also the evidence of evolution. Third type of evolution is of biochemical evidence. Biochemical evidence. Biochemical evidence. What is the biochemical evidence? If we see the biochemical pathway of different organisms, if we see the different types of proteins, if we see the protein is made up, all the protein is made up 20 essential amino acids. All the protein in the nature, not in plants and animal, in the nature, which is may be present in plants or may be present in animal, that is made up from only 20 amino acids. Means ये सब में जो प्रोटीन बना केवल इन्हीं से बना है. That show the biochemical evidence. All the pathway, that like respiration, excretion or any other pathway, that is show the all organism is developed step by step, evolved step by steps. That is the biochemical evidence. प्रोटीन की देखें, आरएनए की देखें, डीएनए की देखें, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस की देखें जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में चलते हैं, देयर सिमिलर इन देयर प्रोसेसेस. रेस्पिरेशन देखें, फोटोसिंथेसिस, इफ यू सी द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, in all the plants, photosynthesis process is of similar. That is the evidence of biochemical evidence. And next is of, that is evidence from embryology.
evidence from embryology. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी देखा जाए. एट इनिशियल स्ट्रक्चर द ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड फ्रॉम द single celled eggs. After the fertilization that eggs will be developed into zygote. अगर अपन वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो देखें स्टेप बाय स्टेप तो इनिशियल स्ट्रक्चर पर सबके एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं, फिर एडवांस स्टेज पर जाकर के ये चेंज हो जाते हैं. इसी तरह से अगर अपन देखें टेरिडोफाइट्स और प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म के करैक्टर. टेरिडोफाइट एंड प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, उन दोनों के अंदर जो स्पर्म होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं इनिशियल स्ट्रक्चर पे. तो दैट इज द embryological, we can say that is also embryological or initial character that are similar. Like that adult frog secrete urea and tadpole secrete ammonia as a excretory product. Adult frog secrete urea and tadpole secrete ammonia like feces. That show that amphibians develop from the feces. या amphibians feces से develop हुए क्योंकि ये tadpole which looks like a fish and that secretes ammonia, but adult frog secrete urea as a excretory product. Like that birds excrete uric acid. Birds excrete यूरिक एसिड. बर्ड से क्या निकलता है? यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है फ्रॉम देयर एम्ब्रियो दैट सीक्रेट अमोनिया. एम्ब्रियो से क्या सीक्रेट होता है? अमोनिया. एंड दैट इज ऑल्सो एम्ब्रियोनिक एविडेंस. ये एम्ब्रियोनल स्टेज पे सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन में, फिश हो, बर्ड्स हो, amphibians, so they secrete ammonia at initial stage, but later they may be urea, uric acid या अलग अलग chemical process हो सकता है. So that is the embryological evidence that show that ancestor, that show the common ancestry or that ancestor is of similar types. The next evidence is of biogeographical evidence. Biogeographical evidence.